Hello, bachcho. So let's see the question. So the question says that prove the following by the principle of mathematical induction. So that is 1 square plus 3 square plus 5 square so on plus 2n minus 1 का whole bracket का square is equals to 1 by 3n bracket into my bracket 4n square minus 1. So here we have to prove this function with the help of principle of mathematical induction. So the key concepts are that we have to prove this with the help of principle of mathematical induction. So let's do it. So what we have to do now for proving this, consider a statement P of n where n is a natural number, then to determine the validity of P of n for every n use the following principle. So according to this, what we are trying to say is we are let P of n be 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus ब्रैकेट में 2n minus 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3n that is n by 3 ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, हम 4n स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं. इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. दैट विल बी, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ऑफ n इज इक्वल्स टू, एज यू नो हमने 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ब्रैकेट में 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n बाय 3. हमने अंदर था 4n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, डेट इज a प्लस बी a माइनस बी. तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1. ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, with the help of principle of mathematical induction we will prove this function. So what we have to do in step 1, check whether the given statement is true for n equals to 1. तो n equals to 1 के लिए हम चेक करेंगे. So if n is equals to 1, so LHS में equals to 1 square equals to 1. ठीक है, and RHS is equals to 1/3 big bracket 2 into 1 minus 1 big bracket close, फिर big bracket 2 into 1 plus 1
After solving this we get 1. ठीक है, so LHS equals to RHS. So here n equals to 1 is true. Therefore P of n is true for n equals to 1. तो स्टेप नंबर 1 तो ट्रू प्रूव हो गया, फॉर n equals to 1 p of n is true for n equals to 1. So now step number 2. Step 2, now what we will do, assume that given statement, that is p of n is also true for n equals to k, where k is any positive integer. जो स्टेप नंबर 2 में n equals to k है, so therefore 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus ब्रैकेट में 2k minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k by 3 ब्रैकेट में 2k minus 1 इंटू में ब्रैकेट 2k plus 1. ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3. So in the step 3 we have to do prove that the result is true for p of k plus 1 for any positive integer k. ठीक है, तो स्टेप 3 पे चलते हैं. So in the step 3 n is equals to k plus 1, so that is 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में k plus 1 माइनस 1 की होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k plus 1 by 3 बिग ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में k plus 1 माइनस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू में बिग ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में k plus 1 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो हम RHS को हम अभी है RHS की साइड में है, डेट इज k plus 1 इंटू में 3. सो हम RHS अभी प्रूव कर रहे हैं, डेट इज k plus 1 इंटू 2k plus 1 इंटू 2k plus 3 बाय होल में 3, डेट इज दिस. तो अब हम LHS पे चलते हैं. LHS equals to 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2 ब्रैकेट में k plus 1 minus 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर. So we will solve this. After solving we get 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2k minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k plus 1 का होल स्क्वायर. So now what we will do,
ये जो पार्ट है अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 2 से रिलेट करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 दैट इज k/3 इंटू में 2k-1 इंटू 2k+1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 से रिलेट कर रहे हैं, स्टेप 2। सो वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप k/3 इंटू में 2k-1 इंटू 2k+1 प्लस 2k+1 का होल स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, 2k+1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बिग ब्रैकेट में बचेगा 2k² माइनस k प्लस 6k+3/3, ठीक है। सो डेट इज 2k+1/3 अंदर ब्रैकेट में 2k² प्लस 2k प्लस 3k+3, ठीक है। डेट इज 2k+1/3 अंदर ब्रैकेट में 2k इंटू में k+1 प्लस 3 ब्रैकेट में k+1 हमने कॉमन लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2k+1 इंटू में k+1 इंटू में 2k+3/3, ठीक है। तो ये हमारा LHS हो गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। Therefore, LHS equals to RHS. So, the result is true for n is equals to k+1, ठीक है। So, by principle of mathematical induction, the statement is true for all n belongs to natural number. So here we prove this. Hope you all understand well. Best of luck. Thank you.